بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear students. Welcome again in online class. This is class 5th, subject essays and lecture number 13. First of all, we want to read. So come to page number 26. The topic is Antarctica. Antarctica is the region around the South Pole. It is a vast ice-covered continent. This area is even colder than the Arctic, with temperatures dropping to as low as -87 degrees Celsius. Icy winds blow at speed of 300 kilometers per hour. In 1911, a Norwegian called Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole. Antarctica is a large continent, separated from the nearest other land mass, South America, by nearly 1,000 kilometers of the roughest ocean in the world. This continent contains almost 90% of the world's ice. The first explorers in this region found a land of ice and snow. It is bitterly cold and there are frequent hurricanes. Only a few hardy plants live through this short summer, but seal, whales, and penguin all live here. There are no penguins in the Arctic. In the central part of Antarctica, there are mountains which are 2,000 to 3,000 meters high. The mountains' snow, freezing temperatures, deep crevasses, shifting sheets of ice, and the possibility of blizzard make this part of the world the most difficult for anyone to explore. People traveling to this region often suffer from frostbite. Frostbite is a cause when extreme cold affected the face, fingers, and toes. Today, Antarctica is still uninhabited. Various countries have set up research stations there, where scientists record the climatic conditions and try to find out more about this mysterious continent. There may be oil or valuable minerals here, but no mining is done as the Antarctic Treaty protects the environment of this region. Why do we explore? Humans have always been curious about the world around them. Some early travelers simply wanted to find out more about the world. Other explorers went in search of wealth. They looked for land, minerals, oil fields, species, and other resources. In human history, the most important period of exploration is known as the Age of Discovery. The period covers the 5th, 15th, 16th, and early 17th centuries. During this period, European ships explored the world, finding places previously unknown to them. They visited the Americas,
Asia's, Oceania and Africa and establish new trading routes. Of course, there were already well-established land-based trade routes across Europe, Asia, and Africa that explorers from all these continents had covered out long before the age of discovery. The use of ocean-based trade route quickly spread worldwide. After centuries we looking at space through telescopes, humans finally began to explore it in the middle of the 20th century. Scientists have been successful in sending men to the moon. The success of man has not ended here. Space exploration continues with the search for useful resources and for other plants that sustain or could sustain life on them. अच्छा स्टूडेंट्स, रीडिंग के बाद हम आते हैं बोर्ड की तरफ. जो टॉपिक हमने पढ़े उसको एक्सप्लेन करते हैं. पहला टॉपिक हमने पढ़ा था एंटार्क्टिका. रीडिंग में आ गया कि उस जगह की टेम्परेचर या उस पूरे रीजन की टेम्परेचर वो तकरीबन -87 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाता है. यानी सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि लोएस्ट टेम्परेचर वो यहाँ तक आ जाता है. और वहाँ पे भी जिस तरह हमारे इलाकों में तेज़ हवाएं आंधी आती है, तो उन इलाकों में यानी एंटार्क्टिक रीजन में भी इस तरह के तेज़ तूफान आते हैं, लेकिन वो आइसी होते हैं, बर्फ़ के तूफान तेज़, और उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जो कि हमारे समुद्री इलाकों में तकरीबन इस शिद्दत के समुद्री तूफान वो आते हैं. और आईसी इलाकों में जिस तरह एंटार्क्टिक रीजन में ये इंतहाई तेज स्पीड है, इसमें इंसान अपने पाँव पर नहीं तैर सकता, उड़ा के ले जाता है. ये इस इलाके को एक्सप्लोर करने वाला जो बंदा था वो नॉर्वेजन था, रोल्ड एमंडसन उसका नाम था. ये पहले इस इलाके में गए थे, एंटार्क्टिका में गए थे. कब गए थे? 1911 में ये उधर गए थे इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए, तलाश करने के लिए. अच्छा, तमाम तहकीकात से एक बात ये साबित हो गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है. जो दुनिया में मौजूद है उस आइस का या उस बर्फ़ का तकरीबन 90% हिस्सा ये एंटार्क्टिका में मौजूद है. अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे कराकोरम रेंजेस, हिमालयाज़ और इसके अलावा यूरोप या आर्कटिक रीजन, वहाँ पे कितनी बर्फ़ पाई जाती है. तो वो सिर्फ 10% हिस्सा समझा जाता है और बाकी 90% ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है. अच्छा, यहाँ पे एक किस्म का मसला दरपेश होता है हमारे लोगों के साथ. हमारे लोगों से मेरा मतलब है कि जो साइंटिस्ट उधर जाते हैं अमेरिका से या कनाडा से या दूसरे यूरोपियन ममालिक से, तो हम यहाँ के आदी होते हैं इस मौसम के. जब वहाँ पर जाते हैं तो इंतहाई टफ वेदर होता है. इसमें एक मसला स्किन के साथ शुरू हो जाता है जिसे हम फ्रॉस्ट बाइटिंग कहते हैं. ये स्किन पट जाती है, चेहरे, ये होंठ, ये हाथ जो इस तरह होते हैं खाली, ठीक है, या कवर नहीं होते, तो वो जिस्म के वो हिस्से वो पट जाते हैं. उस पटने को फ्रॉस्ट बाइटिंग कहते हैं. अच्छा, दूसरा टॉपिक फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि वाई डू वी एक्सप्लोर.
ہم ایکسپلوریشن کیوں کرتے ہیں؟ زمین کے مختلف جگہوں کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو اس کے کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ ویلتھ کے لیے. ویلتھ مین دولت. یہ دولت کس قسم؟ یہ آئل کی شکل میں ہوتا ہے، یہ گیس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرے منرلز کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو اس کی تلاش کے لیے مختلف سائنٹسٹ نہ صرف ان علاقوں کا، آرکٹک ریجن کا اور انٹارکٹک ریجن کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں وہ مون تک بھی گئے ہیں، یہاں بھی گئے ہیں، اور اس تلاش میں کہ آیا وہاں پہ مون پہ یعنی چاند پہ پانی موجود ہے یا نہیں، یا زندگی گزارنے کے آثار مون پر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو واضح کروں. انٹارکٹیکا میں ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ انٹارکٹک ریجن میں آپ کو کوئی پولر بیئر نہیں ملے گا اور آرکٹک ریجن میں آپ کو کوئی پینگوئن نہیں ملے گا. یہ ذہن میں یاد رکھیں. انٹارکٹک ریجن میں پولر بیئرز نہیں ہوتے اور آرکٹک ریجن میں کوئی پینگوئن نہیں ہوتا. باقی اینیملز تقریباً وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں مشترکہ طور پر. تو یہاں تک کافی ہے. یہ دو ٹاپکس ہم نے پڑھے، انٹارکٹیکا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ وائی ڈو وی ایکسپلور. امید ہے یہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کریں. شکریہ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.